Yeah, so basically we are starting chemical bonding we have already completed. So that's why we are starting the part in which we are going to talk about the basic introduction of the organic chemistry or the compounds which we are going to deal with in the organic chemistry, and then we'll enter into the nomenclature wala part. So this is not only nomenclature, it is just to give you the basic ideas which you are going to use in the future, including the nomenclature of the compounds, because sometimes they'll be giving you the name of the compound and will not give you the structure of the compound. Then if even if you know the concept, even if you know the reaction, but if you don't know the name of the compound, then you cannot answer that type of question. That's why this is important. First thing, nomenclature is having a limitation, because if you see the official book of nomenclature, it is I think perhaps it is called Blue Book. So that is having thousands of pages. So we cannot cover all those things, which is always नॉर्मली ये 10-20 ईयर्स में एक बार वो मॉडिफाइड वर्जन आता है जिसमें कुछ कुछ चीजें अपडेट की हुई रहती है. जैसे 2013 में लास्ट आया था, 2023 का नहीं दिखा है मुझे अभी तक. 93 में उससे पहले आया था, तो मे बी हो सकता है वो 20 ईयर्स में निकालते होंगे. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लू बुक व्हिच इज ऑन द आईपीसी ऑफिशियल वेबसाइट, in which they always reported what should be modified, and nomenclatures are changing टाइम टू टाइम. तो इसमें ऐसा नहीं कि जो 25 साल पहले पढ़ते थे वो एग्जैक्ट अभी भी चल रहा है. देयर मे बी चेंज इन नोमेनक्लेचर व्हेन दे एक्सप्लोर सम न्यू केसेस, है ना. तो आज का काम क्या है, सबसे पहले व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग ना, we'll talk about what kind of compounds we are going to deal with in the organic chemistry, और उसमें वो स्ट्रक्चर दिखता है तो उसका मतलब क्या है, and the terms related to that like we'll be talking about primary secondary tertiary कार्बन क्या होता है, quaternary कार्बन भी मिलता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन क्या होता है, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है. तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमारे पास बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएंगे, एंड वी नीड टू नो दोज टर्म्स ऑल्सो. तो आज का क्लास बेसिकली देखो रफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. ऐसा मत समझ लेना दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, like carbon monoxide, carbon dioxide, or some compounds related to that we are going to study in inorganic chemistry, not in the organic chemistry. ये होता क्या है ना, कार्बन हाइड्रोजन की एफिनिटी इतनी ज्यादा है कि देयर आर मेनी कंपाउंड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय और व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचर बाय which is having carbon bonded with hydrogen, and that group of compounds is called hydrocarbons. First thing. Second thing is, हो सकता है उसमें से कुछ bonds replace हो जाए, another bonds can also be formed. Then we'll be talking about those compounds also, and they will be called derivative of hydrocarbons. Every kind of compound will become a chapter in future for you. ठीक है. So like I'll show you today also, जब हम लोग nomenclature की बात करेंगे. So when I'm saying what is organic chemistry, it is basically the study of hydrocarbons and the derivatives of hydrocarbons, उनकी study करते हैं. Then we call that organic chemistry, है ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन रफली अभी बता दूंगा, बाद में हम लोग टेक्निकली उसके डिटेल में जाएंगे. बट रफली किस किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे. We can have some compounds which are open chain, there is no cyclic ring formed in that, and in that also we can have some compounds which will be completely saturated. Some compounds can have unsaturation also. When I say unsaturation, what does it mean? It means there will be some multiple bond. Okay, so if you see this compound, there is no multiple bond, everything is single bond only, there is only sigma bond formed. But if you see these compounds, this one or this one, we have multiple bonds, double bond or triple bond. So whenever some double bond or triple bond will be coming, we'll be saying some unsaturation has come into the picture. Is it okay? Any doubt? So this was first type of compound. Second type of compound is closed chain or cyclic compound, जिनको हम लोग बोलते हैं जिसमें रिंग बनता हुआ दिख रहा हो. कार्बन जहां से स्टार्ट किए, इफ यू गो फॉर द फ्यूचर कनेक्टिविटी, फाइनली उसी एटम पे आ जाओगे जहां से स्टार्ट किया था. देन वी स्टार्ट कॉलिंग देम साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज्ड चेन भी बोल देते हैं कभी कभी उसको. अब इसमें भी दो टाइप की पॉसिबिलिटीज आती हैं. वन इज दैट द पार्ट ऑफ चेन इज कार्बन ओनली, लाइक इफ यू सी दीज कंपाउंड्स ना, ये जितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, दीज आर कार्बन विद अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. विल टॉक अबाउट दैट आल्सो कि हाउ टू राइट द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. बट राइट नो लाइक ये है, इसका मतलब क्या है, वी हैव गॉट कार्बन बॉन्डेड विद कार्बन, कार्बन बॉन्डेड विद कार्बन, कार्बन बॉन्डेड विद कार्बन, and each carbon will have 2 hydrogen because carbon is tetravalent, है ना. It must have 4 bonds.
in normal compounds. So these are the bonds it is having. So it is a cyclic ring and the part of the ring is carbon only, then we are calling it homocyclic. We can have some compounds which are not aromatic. What is aromatic? We'll learn about that. But ये word कहाँ से आया? ये आया aroma से. These compounds are having a very particular smell. Sometimes you can feel it like fragrance. कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है, वोमिट भी कर देते हैं. ठीक है. तो like I'll give you practical example. कार्स वगैरह जो बंद होती है ना, उसके अंदर जो पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल में some quantity of benzene is there. ठीक है, बहुत ही लिमिटेड होता है, बट इट इज स्टिल देयर, विच इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ. तो बेंजीन इज एक्चुअली कार्सिनोजेनस. ठीक है, कैंसरस कंपाउंड कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर दे आर डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ना, लाइक पेट्रोल या डीजल में देखोगे, ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 ऐसा चलता है. इंडिया में उसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको लूज कर देते हैं और उसको भारत स्टैंडर्ड बोलते हैं, BS. तो बहुत सारी कार्स में लिखा होगा BS4, BS3, BS5 ऐसा लिखा रहेगा ना. तो दैट इज भारत स्टैंडर्ड, मतलब उसी को बेसिकली कॉपी पेस्ट होता है. एक आध थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, इनफैक्ट थोड़ा सा लिबरल उसको बना देते हैं स्पेसिफिकेशन को. एंड आउट ऑफ दोज स्पेसिफिकेशन हाउ मच सल्फर शुड बी देयर, दैट इज वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बेंजीन भी आता है. बेंजीन का होना परफॉर्मेंस बढ़ाता है, बट ऑब्वियसली इट इज हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट गुड, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ द बेंजीन, एंड दैट्स व्हाई there will be limitation in terms of specification of the petrol and diesel, है ना. तो वहां पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि whenever you are leaving your car for a long time ना, तो क्या होता है ना, उसके अंदर बेंजीन कहा जाता है एक्युमुलेट हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि अगर बहुत टाइम तक कार छोड़े हुए हो तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग द कार ना, डायरेक्ट एंट्री नहीं मारने का है, ओपन करो, एसी चलाओ, थोड़ी देर खुला रहने दो, सो दैट ऑल द बेंजीन विल बी गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर, इट विल नॉट अफेक्ट यू डायरेक्टली. तो दैट्स वन ऑफ द सजेशन दिया जाता है टू जस्ट गेट टू बी कॉशियस विद द बेंजीन वाला एक्सपोजर, है ना. दैट्स वन पार्ट. तो क्या होता है, उसमें एक स्मेल आती है, तो दैट स्मेल इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्मेल ऑफ पेट्रोल और डीजल आल्सो, बट दैट इज नॉट द मेन स्मेल, बट वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एक अजीब सी गंध आएगी, which can feel like aroma जैसा, मतलब there is fragrance obviously, but वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन होता है फ्रेग्रेंस या एरोमा का, है ना. दैट्स वन पार्ट. तो वर्ड तो वहां से आया एरोमेटिक, बट देर इज अ टेक्निकल डेफिनेशन. इस पे एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग. इनफैक्ट इट विल टेक 1 or 2 लेक्चर when we will be discussing about something called aromatic compounds and aromaticity. और बाद में तो 2 चैप्टर बनेंगे, like aromatic hydrocarbon will be one of the chapter. like ये पूरा एक चैप्टर बनेगा, जो ये सब दिख रहा है ना, इनके रिएक्शंस किस टाइप के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उस पर देयर इज अ चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. वैसा ही बाद में हम लोग बचे हुए एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी बात करेंगे. लाइक वी कैन हैव फेनॉल, वी कैन हैव बेंजोइक एसिड, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं. एनिलीन हो सकता है. एनिलीन इज लाइक, इट इज लाइक ऐसा रहेगा, एंड देन यू हैव NH2, तो दिस इज कॉल्ड एनिलीन. ये ऊपर कहीं ना कहीं, नहीं इधर नहीं बनाया कहीं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एनिलीन. वैसा ही वी कैन हैव, आगे आएगा ये सब, वी कैन हैव दिस वन जिसको हम लोग फेनॉल बोलेंगे. तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको पढ़ना है हम लोग को डिटेल में. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिएक्शंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स, एंड देन डेफिनेटली देयर आर 2 चैप्टर्स बेसिकली. द वे आई टीच ना, उसमें मैं 2 चैप्टर बना के रखता हूँ. एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अदर एरोमेटिक कंपाउंड, जिनकी बात मैंने यहाँ पर की, एनिलीन, फेनॉल, इस तरह के जितने कंपाउंड्स रहेंगे उनको एक चैप्टर बना के, उसमें काफी सारे बेंजल्डिहाइड है, बेंजोफेनॉन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी बात अलग से करेंगे. तो दीज आर 2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें हम लोगों ने इसको होमोसाइक्लिक बोला है बिकॉज all the atoms of the ring are carbon atom only, and that's why they are homocyclic. In that we can have alicyclic or aromatic. एरोमेटिक का मतलब है, एरोमेटिक का टेक्निकल डिफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, बट जो एरोमेटिक नहीं है उसको एलिसाइक्लिक बोल दिया, या फिर इन जनरल उसको एलिफैटिक भी बोल देते हैं. हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है देयर विल बी सम अदर एटम as the part present as the participant of the ring. Like यहाँ पे we have got oxygen at the carbon is there are 2 carbon atoms but one oxygen is also there. वैसे यहाँ भी देखो, this is having an oxygen, so now this will be called heterocyclic compound because we have got carbon के अलावा there is some other atom being the participant on the of the ring, है ना. Like this is called ethylene oxide, epoxide भी बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे. And this is called tetrahydrofuran. इसमें we can have aromatic also, but again the part of ring should be at least one atom should not be carbon. It should be any atom other than carbon. Like nitrogen is there, oxygen is there, sulfur is there. So these are the compounds which are having at least one atom other than carbon as the participant of the ring.
एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ये सब नाम धीरे धीरे याद करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज बताए आज याद हो जाएगा. द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग दिस कंपाउंड्स अपने आप चीजें याद होने लगेगी. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? Clear है? तो these were the two different type of compounds we are going to frequently deal with. That's one part. Now इसके आगे की कहानी कैसी है? तो अब organic compounds को how to represent the organic compounds? So there are basically 4 ways in which you can represent the organic compounds. These are the 4 ways in which you can represent the organic compounds. Like if you see the pahla wala, that is the basic one जो Lewis structure में dot लगाते हैं. Every dot is representing an electron, and if the electron pair is in between two atoms, that is a shared electron pair, है ना? Or that is also called bond pair. तो ये देखो दो bonds यहाँ पे है ना, तो उसी की जगह एक dash दिखा दिया, तो it is called structural form. Is it okay? For every electron pair, bonded electron pair, we represent a dash. मान लो 2 पेयर रहते तो डबल डैश लगाते, दैट इज डबल बॉन्ड, है ना? दैट इज सिंपल. नाउ वी कैन हैव अ लाइन डायग्राम और आल्सो नोन एज स्केलेटन फॉर्मूला, और दिस इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. इसकी डिटेलिंग अभी हम लोग करेंगे. इसमें क्या है ना, वी विल बी हैविंग सम लाइंस. Now, every corner is representing a carbon atom along with appropriate number of hydrogen to fulfill its tetravalency. Like, if I am having this compound, ये ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? This is actually CH3, CH2, and then CH3. Okay, this is the compound. It is actually propane. आगे जाकर पढ़ेंगे इन सबके names क्या होते हैं. And इसी को देखो, इसी चीज को, this is same as this one. तो इसी को क्या किया है ना, बॉन्ड्स वगैरह नहीं दिखा है, सिर्फ ग्रुप्स लगा दिए हैं. देन दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला. समटाइम्स विल बी गेटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस फॉर्म्स. ऐसा नहीं कि हर बार एक पर्टिकुलर टाइप ही रहेगा. यू कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मूलाज आल्सो. बट बॉन्ड लाइन के लिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं आगे. व्हाट काइंड ऑफ structure you can get and what is the representation of the structure. तो sometimes they will be giving you the bond line formula. जैसे देखो ना, ऊपर जितना भी लिखा था मोस्टली ये सब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये सब सारे के सारे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिख रहे हैं, है ना? दीज आर द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. बट यहाँ जो बनाया है देखो, ऊपर में जब मैंने ओपन चेन बनाया था तो वी वर हैविंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाज देयर, है ना? तो दैट वाज अनदर पार्ट. ये जो डॉट फॉर्मूला ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, दैट इज नॉट द फ्रीक्वेंट टर्म. इतने सारे डॉट्स डालने होंगे, उसमें एक पॉइंट जरा सा एक्स्ट्रा डल गया तो कंफ्यूजन हो सकता है ना. तो ये अब यूज करते नहीं. तो बाकी जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, या तो ये यूज करते हैं या कंडेंस्ड, कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन को भी यूज कर लेते हैं. समटाइम्स दैट विल आल्सो बी द सिचुएशन, यू विल सी दैट. जैसे मैं ये बना रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग दिस वन एंड मैंने यहाँ पर CH3 लिख दिया. अब ये देखो ना, दिस इज द कॉम्बिनेशन, है ना? दिस नॉट एग्जैक्टली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना? तो ऐसा कुछ बना दिया तो देन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. बट पर्टिकुलरली इफ आई एम हैविंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, how to get the bond line formula for a particular compound if I am knowing the structural formula or the condensed formula, and if I have been given the bond line formula, how to identify what is the structure or what is the molecular formula of that compound. उसके लिए 4-5 पॉइंट्स हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, कार्बन और हाइड्रोजन को जनरली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वी डोंट शो. ठीक है, वी डोंट शो द कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट मींस कार्बन. ऋषित, एनी प्रॉब्लम क्या? Net is not working. Rishit, yeah, net is not working. Yeah, Rishit, what happened? Okay, no problem. Okay, understood. Yeah. So what I was saying, ki if I am having the structure, then I am not going to show any carbon or any hydrogen which is directly bonded with carbon in the bond line structure. That's one part. But any carbon-carbon bond will be represented by a dash. If there is a single bond, then it will be represented by one dash. If there is a double bond, we'll be representing it by double bond. है ना? दो dash दिखा देंगे. That's one part. Like I told you, if I'm having, I'll just show you some of the examples. If I'm having this one, this is the formula. अभी इसी को represent करना है. क्या करेंगे? We have got 4 carbon जो directly bonded दिख रहे हैं, तो we can represent it like this. And second carbon is having one extra carbon bonded with it.
तो ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस स्ट्रक्चर. इज इट ओके? एनी डाउट? देख लो एक बार. So that was first point, है ना? This was the first point कि wherever we will be getting carbon and carbon bond, hydrogen bonded with carbon, they are not going to be shown. But all the bonds of CC bond, all the carbon-carbon bonds will be shown by the dash. Okay, that's one part. The necessary number of hydrogen required by each carbon for tetravalency are assumed to be present. मतलब मैंने अगर ऐसा लिख दिया ना, किसी ने उल्टा कर दिया है. If I have been given, if I give you, मान लो ऐसा लिख दिया एंड ऐसा लिख दिया. अभी किसी ने बोला कि ये फॉर्मूला इसका क्या है जस्ट. हाँ. अभी किसी ने बोला ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. देन इफ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से स्टार्ट करो. वी हैव गॉट, यहाँ पे देखो देयर इज अ कार्बन, है ना? तभी तो यहाँ बीच में डैश है, इन दोनों के बीच में डैश है. देयर आर कार्बन एटम्स एंड दैट्स व्हाई विल बी राइटिंग कार्बन बॉन्डेड विद कार्बन. यहाँ भी बॉन्डेड विद कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी. देन कार्बन and there is one carbon here. Is it okay? Skeleton समझ में आ गया? Now what we'll do, we need to write appropriate number of hydrogen ions. ऐसा नहीं कि इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है, there are hydrogen, तो we'll be putting 3 hydrogen because there was just one carbon bond, है ना? यहाँ पे भी we'll be putting 3 hydrogen because it was having just one bond. यहाँ पे we'll put only one hydrogen, तो directly भी लिख सकते हैं, bond बना के भी लिख सकते हैं. यहाँ पर I'll be writing CH2, यहाँ पे I'll write CH, यहाँ पे I'll write CH2, यहाँ पे I'll write CS3 and यहाँ पे I'll write CS3. Is it okay? Any doubt? Anyone having any doubt? Organic में कुछ भी आ जाए पूछ लेने का है. Don't hesitate in asking the doubt because अभी तो ठीक है nomenclature चल रहा है, बहुत frequently नहीं यूज होगा, but whenever we'll be entering into GOC, that is going to be the basic foundation of your complete organic chemistry. GOC नहीं तो organic नहीं, सीधा. मतलब you can think कि काम चल जाएगा, बाद में काम नहीं चलेगा organic में. If you know GOC, there is a chance that you'll get that command over organic chemistry. If you don't know the GOC, it is guaranteed that you can't handle the organic chemistry. So GOC, isomerism, reaction mechanism. These are going to be the 3 chapters which are the most important, which will be used in every remaining chapter. Okay. So that's why I'm telling you again and again. If you have any doubt, just रुक के पूछ लेना है बिना शर्माए. Now, so this was about second point. Third point पे आते हैं. If I am getting some heteroatom like कार्बन के अलावा कोई एटम आ गया, तो उसको हम लोग लिखेंगे भी और उसके साथ के हाइड्रोजन को भी दिखाएंगे. लाइक इफ आई एम शोइंग यू, मान लो अपने पास एक कंपाउंड है विच इज CH3 CH2. अभी छोटा सा लेते हैं, दिस वन. दिस इज द कंपाउंड एंड इफ आई हैव टू शो इट कि इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बताना है, तो वी हैव गॉट ओनली 2 कार्बन. तो कार्बन कार्बन एंड देन यहाँ पे लास्ट में अगर मैंने कुछ नहीं लिखा ना, तो विल अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ कार्बन था, बट देयर इज नो कार्बन हियर. वी हैव गॉट द हाइड्रोजन एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू शो इट एट. Okay, like I'll tell you an example again. If I have got CH3 CH2 4 CH2 CH3, क्या करेंगे? We have got 2 कार्बन, 2 कार्बन, बीच में ऑक्सीजन इज देयर and that's why फिर ये. So this will be the bond line structure for, this is called actually ethoxyethane और डाइथाइल ईथर भी बोलते हैं इसको, तो वो बाद में बात करेंगे नाम की. तो but right now I'm just telling you कि if I have got a structure or if I have got bond line structure, we need to know कि उसको कैसे interconvert करना है. Any doubt up to this point? चलो, तो this was the third part. Fourth part, every joint of 2 or more lines, है ना? कहीं भी यहाँ पे कॉर्नर है तो यहाँ पे एक कार्बन है. अगर कोई दूसरा एटम रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, then every joint of 2 or more lines or at the end of a line, we consider that it is having some carbon atom with appropriate number of hydrogen, है ना? So like I told you, अभी just हम लोगों ने किया, ये तो काम कर ही लिया है. So that is another part, ये भी already covered है. Now the last point is, if you are having a single bond or double bond, you can have sp3 or sp2 hybridization which is having angularity in bond, है ना? If I am having sp3, तो वहाँ tetrahedral arrangement होता है सारे electron pairs का, and that's why there will be some angle made. It will not be linear. If I am having sp hybridization, that means वहाँ जहाँ पर normally triple bond आएगा, वहाँ पर we need to maintain the angularity. देखो हर जगह मैंने
राउंड दिया है, एक बार ऊपर गया फिर नीचे चला है ना. It was like I was giving it some angularity. But if I am getting a double bond, even then I'll be giving it some angularity. But if I am getting triple bond, then I need to maintain the linearity, है ना. तो वहां पर जैसे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं. तो लाइक मान लो अपने पास एक कंपाउंड आ गया विच इज लाइक if I am having CH3, CH double bond, CH, CH double bond, CH, C triple bond, CH या फिर CH3 ऐसा है. Now I have to represent it. जरा खुद से ट्राई करके देखो and then I'll draw it so that you can verify it कि you are able to get the compound or not. खुद से ट्राई करके देखो इसको. Write the formula, then I'll be giving you many questions also. Done ना. चलो करके देखते हैं इसको. If I'm drawing the structure of this bond line structure or bond line formula of this one, so I'm having 1 2 3 4 5 6 7 8, total 8 carbon atoms are there. But यहाँ पे if you see there is a triple bond, that means it is sp hybridized, that we have covered in chemical bonding. These two are sp hybridized atoms, है ना. तो इनके around we cannot have angularity, and that's why total 8 तो है but start के 5 can be represented by like this 1 2 3 4 5. 5 के बाद जो 6 है ना, उसको मैंने जैसे ही मेंटेन किया. देखो अगर मैं यहां से करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड देन 6th कार्बन इज sp, तो द मोमेंट आई रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, इसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को ऐसा दिखा देने का है. एंड देन वी हैव गॉट वन मोर कार्बन, तो ये देखो लीनियर ही जाएगा, डॉट्स वगैरह नहीं डालते, डायरेक्ट दिखाते हैं. तो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड. यहाँ पे डबल बॉन्ड भी डालने, तो सेकंड एंड थर्ड के बीच में तो देयर इज डबल बॉन्ड है. उसके बाद फिर फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में तो देयर इज डबल बॉन्ड है ना. तो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल बी शोइंग द अबव फॉर्म. तो सर एसपी में ये नहीं होगा, कॉर्नर नहीं होगा? नहीं बना सकते ना, बिकॉज एसपी के अराउंड तो बॉन्ड्स आर लीनियर है ना, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट पुट द कॉर्नर. कहीं बना के दे देते हैं बट दैट इज टेक्निकली रॉन्ग. Any doubt up to this point? These are some of the examples. जरा इसका ड्रॉ करके बताओ what will be the bond line formula for this compound. And I'll show you like एक जगह यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, this is double bond. So just a doubt here. Then sir, Yeah, Sarah, tell me. So यहाँ sir, so with oat should we represent the H here or do we not? With What? The With So with the O is oxygen- already having double bond, है ना. O generally forms two bonds, then there is no requirement Yes. of hydrogen. It is having two lone pairs. It is obvious there, है ना. so There are like two lone for pairs. It will not be shown to you. It is obvious that oxygen generally forms two bonds. If already there is a double bond, then there is no hydrogen required, है ना.
So for the oxygen, like the hydrogen attached to the oxygen, like the other oxygen, which Yeah, is this attached to the one, carbon. this Yes, one. so there should we show the H, or do we like not show it? It is having hydrogen and oxygen के साथ जुड़ा हुआ hydrogen we have to show, है ना? Any hetero Okay, atom, any other atom other than carbon, if there is some hydrogen, it has to be shown. okay, sir. So like if you see there is a 5-membered ring, है ना? बीच में यहाँ 5-membered ring दिख रहा है, तो I'll show it like this is the ring जिसकी बात ये किया हुआ है. And then after ring on this side we have got one Cl that we need to show. इसके बाद if you see this one, तो यहाँ पे we can put it like ऐसा गया, यहाँ पे there is a double bond. And then इसके बाद यहाँ पे we have got OH, we need to show that. And then we have got CS3, so we don't need to show that. This will be the bond line formula for this compound, है ना? तो इसे practice कर लेते हैं. I'll give you some of the questions. दोनों directions से दूंगा. First I'm giving you condensed formula or the expanded formula, and then we'll talk about another kind of question. So like if I'm having, first is, if I give you CS3, CH2, CH, COCS3. Second one is if I'm giving you double bond CH, then CHO. Okay. Third one is CS3, CH2, CO, NH, CS3. Fourth one is CS3, CH, OH, CH2, CH, CS3, C triple bond N. Fifth one is CS3, CH, CH2, CS3, and then we have got यहाँ पे CH double bond CH, CH2, CO, OH. Do these examples. So organic is about practice only. Whatever you are learning, you have to do the practice for 20-30 questions. फिर जाके confidence आएगा. Udayan, why your camera is off? And a third? सॉरी सर मैं ऑन ही कर रहा हूँ. Okay. Udayan, you there? Yes, sir. Yes, sir. Just give me 2 minutes and So first one, we have got 4 carbon in line.
So I can put it like this. Zigzag का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ही लेके जाना है. You can go down also. That's okay. So we have got 4 carbon and then we have got यहाँ पे double bond O. बस this is the representation of the first compound. Okay. You can go down also. मतलब ऐसा नहीं कि इसको तुम ऐसा भी लिख सकते थे. तुम इधर जाओ फिर ऐसा करके. This is also the representation, not a problem. Okay. Either write you this or this. दोनों चलेगी. ऐसा डायरेक्शन का इशू नहीं है. In any direction you can move. दूसरा वाला देखो, we have got 1 2 3 4 carbon in line. 1 2 3 4 carbon in line, and second and third के बीच में we are getting the double bond, and then last वाला carbon जो है उस पे we have got a double bond O. Sometimes in order to avoid confusion इधर H दिखा देते, दिखा दिया तो भी ठीक है, नहीं दिखाया तो भी ठीक. मतलब if you have to show it, you don't show it, है ना. हाइड्रोजन को नहीं दिखाने का if it is bonded with hydrogen. But sometimes questions में देखोगे, books में देखोगे, you can have last में जब CHO रहता है तो पूरा दिखा देते हैं, H दिखा देते हैं normally. But as per the rule, you don't show it. Next one is we have got 1 2 3 and then fourth one is nitrogen and then फिर again carbon. So we have got 3 carbon in line. 1 2 3 and then we have got nitrogen and वहां पर sp hybridization नहीं है तो again we'll be having linearity angularity and that's why we are showing it like this. नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को दिखा देते हैं, either NH लिख दो या फिर N dash H लिख दो चलेगा. And then if you see third carbon is having a double bond हुआ है ना. Next one. 1 2 3 4 5 carbon and then nitrogen. 5 carbon is like 1 2 3 4 5 and then we have got nitrogen, but that is having triple bond. That means this fifth carbon is sp hybridized, and that's why we need to maintain that linearity. And then we'll check it what are the other groups present. तो यहाँ पे we have got OH second पे, third पे कुछ नहीं, fourth पे we have got CS3, so it will be just be represented by a dash. बस इतना ही था. This much will be the answer. Any doubt? Chalo, last one, let's see. We have got in one line 1 2 3 4 5 6 6 carbon. So 1 2 3 4 5 6 and then 6 carbon is having OH and a double bond O. That is one part. Now at the second carbon we have got an ethyl group like दो carbon और है that we have represented here. And if you see third and fourth के बीच में there is a double bond that we have shown. बस बाकी सब तो दिखा दिया हमने. So this is the bond line structure. Any doubt in this part? Any doubt? चलो एक अपोजिट डायरेक्शन का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं. You have to write the molecular formula. That means C5H8O2 ऐसा कुछ. ठीक है? And I'll be giving you some of the compounds. Like first one is, if I give you. So,
Sir, should we type our answers or should we write it and keep? टाइप द आंसर ना, इसको तो टाइप कर ही सकते हो, है ना? These many questions you solve. Niranjan, it's like कि पूरा expand करके नहीं लिखना है. You have to tell me, like, if you are having 6 carbon and total 12 hydrogen, then you will be saying C6H12 ऐसा, ठीक है? तो I have asked you molecular formula, not the condensed one. इतना पूरा लिखने का नहीं है. You have to just tell me the molecular formula. Okay. Started getting many questions, many answers. Sarang, you don't have to write the complete expanded one. You have to write how many carbon, how many hydrogen, how many oxygen. If there is nitrogen, then how many nitrogen. ऐसा like glucose is C6H12O6 है ना? We don't Oh, write the okay. detailed part है ना? तो वैसा Okay, molecular formula पूछ रहा है तो उसी में उतने से काम हो जाए. Oh, अच्छा, okay. Okay. So like first में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 carbon. So I'll write C6. Now how many hydrogen? So here we'll be having 3 hydrogen. Here will be 3. We'll be having 3, 3. यहाँ पे 1 and यहाँ पे 1 है ना? So we have got 12 plus 2, 14. So we'll write C6H14. Okay. Second में we have got 1, 2, 3 carbon. So we'll write C3. Then how many hydrogen? Here we'll be getting 3, 2. यहाँ पे we'll be getting will not get any hydrogen, and then we are getting 2 here. So that's why we'll say there are 7 hydrogen. And then we have got 1 nitrogen and 1 oxygen. Okay. Okay. Next one. We have got 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Na? We have got C5. Then how many hydrogen? Then we have got 3 here, 1 here, 3 here, 2 here, 3 here. So that's why total is 12. We'll write H12 and there is just 1 oxygen without any hydrogen. Third का उदयन 8 carbon कहाँ से आ गया? How can you have 8 carbon? उदयन किधर गड़बड़ हुआ? सॉरी सर, 5 को मैंने 8 देख लिया. Okay. C5H12 वो लिखा. Okay, चलो. Fourth में we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbon है ना? We have got 8 carbon. How many hydrogen? So we'll get 3, 3, 3. There will be 0 here. And already there are 4 bonds. Here we'll be having 2, 2. यहाँ पे we are already having 3 bonds. So there will be 1 hydrogen and there will be 2 hydrogen. है ना? Either 9 to 11 to 13, 14, 16. So that's why we'll write H16. Okay. बाद में इसका शॉर्टकट भी समझेंगे. मैंने विल गो टू आइसोमेरिज्म ना, वहां पर देखोगे ये मैं देख के डिसीजन ले सकता था कि हाउ मेनी
hydrogen atom must be there just by observing the structure. So next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, we have got C8. Okay. And then, इसके बाद hydrogen count करना है. We'll be having 1, 1, 1, 1, 1, 0. यहाँ पे we have got 1 and we'll be getting 2. Is it okay? So we are getting H8 also. This one, 6 तो ring वाला carbon हो गया. And 2 here. So we are getting C8. How many hydrogen? So 1, 2, 3, 4, and then we have got 3 here, 7. We have got 1 here, 8. है ना? H8, and then we'll write O2. Next one, we have got 1, 2, 3, 4 carbon only, C4, and then how many hydrogen? So we'll be getting 1, 2, 3, 4, H4 and O. Next one, we have got 6 plus 4, 10 carbon. And then we have got 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2. So 8 is side, 8 is side, 16 plus 2, 18. So we'll write H18. Is it okay? Any doubt? This was another type of question. So this was one particular part I wanted to cover because you'll be dealing with such type of structure which will be given to you in future. So whenever you have been given a formula, you need to know how to handle that and how to understand what type of formula we are dealing with. Now we are going to talk about classification of carbon and hydrogen in different kind of compounds. Like if I have to identify the type of carbon, so it is about the number of other carbon atoms with which it is attached. Like if you see this one, this carbon is attached with only one other carbon. That's why we are calling it primary, or we write it 1 degree. So this is primary carbon. Okay. वैसा if you see this carbon, it is attached with 2 other carbon atoms. And that's why we are calling it secondary, or we'll write it like 2 degree. If you see this carbon, it is attached with 3 carbon atoms, and that's why we are calling it tertiary or 3 degree carbon. And if you see this carbon, it is attached with 4 other carbon atoms, and that's why we'll be saying it is 4 degree or quaternary carbon. Okay. For hydrogen, the type of hydrogen is same as the type of carbon with which it is attached. So if I ask you in this particular compound, how many primary hydrogens are there? How many primary hydrogen atoms are there in this compound? 15. Okay, let's see. This is primary carbon. This is primary carbon. This is primary carbon. बस यही 4 हो गए और यहाँ पे एक. This is primary carbon. So that's why we have got 5 primary carbon, each with 3 hydrogen, and that's why there are 15. इसमें अगर पूछे तो we'll say 15 primary hydrogen or 1 degree hydrogen are there. Okay, so that is the kind of hydrogen we are talking about. Now, even if I'm having 2 particular type of hydrogen atom or carbon atoms, they can have same degree, but still they can be of different type. Like I'll give you an example how to identify that. मान लो अपने पास अभी के लिए we have got this compound. How many primary carbon we have?
Only 2? 3. Okay. So let's identify those carbon atoms. सर CH के साथ दो This दो is C primary, कनेक्टेड this है is और primary, and CH2 this के is साथ primary, HC. है ना? We have got 3 primary carbon. So we have got 9 primary hydrogen. All of them will be called primary hydrogen only. But if I ask you, which primary hydrogen is different from the other primary hydrogen, how will you identify? You have to see the connectivity. Like if you see this CH3 group ना, next वाले पे क्या मिल रहा है? CH2. If you see this CH3, next पे क्या मिल रहा है? CH. That is different, है ना? And that's why still, if it is primary and this is primary, they are two different kind of primary. And the evidence comes from, if I have to do the monochlorination, that means if I have to just replace one hydrogen and we have to attach chlorine, you will be getting two different compound if you are removing them at different places. Like मान लो यहीं पे, यहां से मैंने अगर, if I am replacing this one minus hydrogen plus Cl अगर किया तो देखो कंपाउंड क्या बनता है. We'll be getting CH3 CH CH2Cl CH2 CH3. But if I remove it from that right side wala, if I'm removing it from here, then क्या मिलने वाला था? We'll be getting CH3 CH CH3, then CH2, and then CH2Cl. And in future we'll see that these two compounds are totally different. They'll be having different name totally, and they are having obviously different structure. Is it okay? So we are saying कि ये दोनों जो है ना, both of them are primary. This is also primary. ऐसे इन दोनों में कोई difference नहीं है. तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? These two are same type of primary hydrogen. This is different type of primary hydrogen than the other. Is it okay? चलो तो इसी पॉइंट पे I'll be giving you some questions. ये पहचान के बताओ 2-3 एग्जांपल्स में. Identify the primary, secondary, tertiary, and quaternary. चलो यहां से बताओ. This is what मैं रेड से डॉट करता जाऊंगा. You tell me. Primary. This is primary. What about this one? Secondary. Secondary. What about this one? Tertiary. सब लोग बोलो. Tertiary. What about this one? Primary. चलो अब एक एक करके बोलना स्टार्ट करो. प्रत्युष, what about this one? प्रत्युष. Which one? अजय, Which one? अभी जो ये सर्कल किया है. So 3 degree carbon. Okay. Vivan, what about this one? Primary. Okay. Atharva, what about this one? Atharv. Atharv, what are you doing? सर आपने मेरे को बुलाया था अभी. हाँ जी.
हाँ सर, We are आपकी आवाज discussing कट कट के something. आई, समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या बोल, मेरे को I लगा was नाम। asking ki what type of carbon it is. Primary, secondary, tertiary, quaternary. सर इसमें प्राइमरी कार्बन होगा। ये तो वाला, पता है, ये वाला. समझ में। This one. तो कौन सा? अभी जो ब्लू से सर्कल किया है. अच्छा, एक। सर ये क्वार्टनरी। Why quaternary? आई एम नॉट श्योर सर, नॉट You are एग्जैक्टली। not giving attention, ना? You are doing something else. नहीं सर, मैं ध्यान दे रहा था, वो बस मेरी अभी तो आवाज पूछ रहा हूँ, तुमने सुना भी नहीं है. Then I am asking you the question. What was the theory? It was very simple that with how many carbon atoms, other carbon atoms, it is connected. What will be the हाँ। answer? It is connected with three, है ना? So tertiary। that's why it is tertiary. Simple. अच्छा ओके, मेरे को लगा आपने वो लेबल कर रखे थे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, Okay. सॉरी। Rehan, tell me this one. 2 degree. 2 degree. Okay. Niranjan, what about this one? 1 degree. Okay. Mayuresh, you tell me about this one. 2 degree. Okay. Rishit, this one. 4 degree. Very good. Udayan, this one. 4 degree. This one. Primary. This one. Udayan, you tell me. प्राइमरी। Primary. Niranjan, you tell me this one. 1 degree. Primary. है ना? चलो अभी तो आइडिया लग गया होगा. This is primary. I'll just write it. If you don't understand, just ask me. This is tertiary. This is secondary. This is secondary. This is tertiary. This is primary. This is tertiary. This is primary, and this is primary. है ना? Okay. So I'll ask you another question. And that question is about the number of monochloro derivatives. It can be the question of isomerism, but right now I'm telling you this one, and I told you every type of hydrogen, if you are removing, then you are going to get a unique monochloro derivative. Monochloro derivative का मतलब है you just replace one hydrogen by one chlorine, है ना? Like I did it here, है ना? एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह Cl डाल दिया. So like I told you, two different type of primary hydrogen will also give you two different type of products, है ना? There is something called stereoisomerism. अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, but जो भी नहीं पढ़ा है वो इग्नोर हो रहा है. But I wanted to be right in the answer also. That's why I'm mentioning it. But तुम्हारे लिए तो अभी तुमको पता ही नहीं वो क्या चीज होती है. So that's why I'm giving you some questions. Just try these questions. Sir, अभी दे रहा हूँ मैं. I'll be giving you question. So right now I'm asking how many monochloro derivatives you are going to get. So first question is if I'm having CH4. Second question is if I'm having ethane, CH3. Third question is if I'm having चलो एक आध बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं. This one. Fourth one is if I give you this one. Fifth is if I give you this one. Sixth एक और दे देता हूँ. This one. सर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब अलग टाइप के हाइड्रोजन होने चाहिए ना? हाँ, तो जितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन मिलेंगे उतने सारे तुमको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे ना. मैंने बोला जितने टाइप के, जितने हाइड्रोजन नहीं. लाइक CH4 is having 4 hydrogen, but all of them are of same type है ना. And that's why we are going to get one monochloro derivative from CH4 है ना. तो यहाँ पर इसका आंसर will be 1. तो क्या होगा वो? तो it will be CH3Cl है ना. किसी एक हाइड्रोजन को हटा के if I am replacing it by Cl, I am going to get CH3Cl only है ना. What about the second one? 2. so one again. 1 or 2? So I think it's one. It will be One. 1 only, because if I am writing CH3CH2Cl or if I am writing CH2Cl and CH3, they are same. What is that compound? CH3CH2Cl. This is one unique product because these are primary and they are of the same type, है ना?
ये CH3 दूसरे वाले से कनेक्टेड, ये CH3 दूसरे वाले से कनेक्टेड है, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। ओके, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए बताओ, थर्ड का आंसर, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स यू आर गोइंग टू गेट? 2 ओके, Two. एक यहां से मिलेगा और दूसरा यहां से मिलेगा, ये वाला तो इसी के जैसा है ना, और ये वाला जो है ना, ये वो इसके फर्स्ट जैसा वाले जैसे। है ना, so that's why we'll be getting 2 only. So just a question in the third Yeah. one. So like so the carbon, the second one, the CH2 carbon, so it's already attached to like two others. So Mhm. we can remove a hydrogen from there, right? Or Yeah, I'm removing it from here, or if I'm removing it from here, it is giving you the same compound. okay, sir. Like in third one, na, if I read that, what is that compound? It is CH3, CH2, CH2, CH3, है ना? Yes. These are same type of hydrogen atoms, है ना? And that's why I can have one product which will be like CH3, CH2, CH2, CH2Cl, or I can have another product which will be CH3, CH, तो यहीं पे लगा देता हूँ, एक Cl इधर लगा दिया, and then CH2, CH3, है ना? So Yes. whatever you will be writing, na, it will be the one of these compounds. जब हम लोग nomenclature में जाएंगे, you will get more clarity about कि we will be doing the nomenclature. अगर किसी ने ऐसा बनाया ना, CH3, CH2, that can be an obvious question that why not this one? बाद में जाकर देखेंगे they are having same nomenclature, that means they are having the same they are the same compounds. Okay, these Okay. two are same. Okay, sir. चलो, fourth one, One. only one है ना? ओके, इधर से करूं, इधर से हटाऊं, सब तो सेम ही टाइप के कार्बन है, दैट्स व्हाई विल बी गेटिंग ओनली वन। व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? 3 हाँ जी, 2 Two. 3 Two. Sir, two. ओके, बी वेरी केयरफुल अबाउट द फिफ्थ वन, बिकॉज particularly in organic chemistry there is no 3 3 Three. 3 है। compensatory prize, है ना, कुछ भी consolation prize नहीं है। if I am asking you a number, if that number is 6 and you are saying 5, you will not get any marks for your effort, you are going to get negative marking सीधा। Understanding my point? So you have to be 100% right to get the right result. ऐसा नहीं कि 6 था मैंने 5 काउंट किया तो उसका 5-6 मार्क्स कुछ मिलना चाहिए, you'll be getting negative marking, सीधा -1 मिलेगा। चलो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में we have got this one. Now पहली बात तो if you see the types of hydrogen, okay, let's see, this is primary, this is tertiary, these are secondary, है ना, these are secondary, secondary and secondary, but are they of same type or are they different type? How many types of hydrogen you are getting, because that is going to give you the number types of monochloro derivatives you are going to get. चलो थोड़ा सर सा, एक 2 डिग्री कनेक्टेड टू हाँ, 3 डिग्री। ये दोनों सेम टाइप है क्या? हाँ यस, ओके। इफ आई आस्क यू ये और ये दोनों सेम टाइप है क्या? सर वापस बोल सकते हो? आर दीज टू Nine. सेम टाइप? नहीं ना। No, sir. Is this one and this one, are they the same type? They are different, all of them are secondary, but you are getting different environment. इसके next to next पे मिथाइल मिल रहा है, ये वाला जब चूज किया ना तो इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे ही मिथाइल मिल रहा है, ये वाला जब चूज किया था तो नेक्स्ट पे ही मिथाइल मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट, है ना। इवन इफ दे आर ऑफ सेकेंडरी, they are all secondary type of carbon and the hydrogen associated are called secondary hydrogen, even then they are different type of secondary hydrogen. Is it okay? And that's why how many types of products we'll be getting? One from here, one from here, one from here, here and here. So I'll be getting 5 monochloro derivative products. Is it okay? सर आई हैव अ क्वेश्चन, ये जो सबसे नीचे सेकेंडरी है और इसके बगल में जो है उसमें क्या डिफरेंस है? ये वाला और ये वाला है ना। यस यस Okay, if you see this one,
just I'll change the color so that is visible to you. If you see this one, Yes. at what distance the methyl group is there? This is methyl, है ना? So at what distance is it there? Next to next to next, है ना? Okay. There is a methyl group present on next to next to next carbon. If Yes. I start saying the same sentence for this one, what I'll say? The methyl Next. group is present on the next to next carbon. बस इतना ही बोला ना? So Okay. we have got two different description about the connectivity of this carbon, है ना? And that's Yeah. why even if they are having same degree, they are not exactly same type of secondary carbon or the secondary hydrogen. Is it okay? Yes. सर फिर वो जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड वो की इधर वाले equivalent की हो सेम है तो इधर रखूं राइट रखूं या लेफ्ट रखूं they are of the same type. Okay, the moment one group is coming na, that is making this and this different. Okay, but this one and this one will be same. This one and this one will be same, and this is a unique. है ना? Is it okay? Any doubt? चलो सिक्स का बताओ. पहले तो डिग्री आइडेंटिफाई कर लो. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, प्राइमरी, है ना? So will it be 4? 4. Okay, let's see. This primary is a unique primary which is different from these two, है ना? But these two are same. And that's why we'll be getting one यहाँ से one, यहाँ से one, और यहाँ इनमें से कोई एक choose करना होगा one. And that's why the answer will be 4. Is it okay? I'll give you one more. How many? Seventh one. 2 So 1 only. Hmm? So it will be 1, right? Okay, trick question है. This is primary, this is primary, this is primary, this is primary, and all of them are of the same type, है ना? Because all of them are connected to the same carbon. This is quaternary, but quaternary doesn't have any hydrogen, है ना? Quaternary के पास तो कोई hydrogen ही नहीं होता, and that's why we'll have answer only 1. Okay, so the answer will be 1 for this question. So just be careful. If it is a quaternary, it is a different type of carbon, but it doesn't have any hydrogen to give you the monochloro derivative products, है ना? Any doubt? तो डिग्री चेंज हो जाए तो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स विल बी गेटिंग within the same degree. If they are having different connectivity, they are of different type again, and they'll be giving you different type of products again. Any doubt up to this point? चलो तो ये तो डिग्री वाइज हम लोगों ने बता दिया विद रिस्पेक्ट टू द कनेक्टिविटी विद द हाइड्रोजन अदर कार्बन एटम्स, बट वी हैव one relative positioning also. What is that? It is about saying alpha, beta, gamma, delta इस type का. तो मान लो if I am having a double bond and उसके respect में if I have to identify alpha, beta, gamma, delta ऐसा कुछ, then what we say that जैसे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ वैसा ही फंक्शनल ग्रुप के साथ बोलेंगे हम लोग, वैसा ही मान लो बाद में कार्बोकेटाइन या कार्बन आयन बनाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे. तो राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ अ डबल बॉन्ड. सो लाइक मान लो if I have got CH3 CH double bond CH CH2 CH2 या फिर एक और कर देता हूँ CH CH3 and CH3. Now with respect to this double bond, if I have to identify with respect to this double bond what kind of other carbon atoms are, then we say that ये जो कार्बन का नेक्स्ट होगा ना दिस विल बी कॉल्ड अल्फा. तो ये जो होगा इसको भी अल्फा बोलेंगे. इसको बताओ क्या बोलूं? दिस रेड वाला कार्बन, it will be the next, so that will be beta, है ना? Beta. What about this one? Gamma.
Gamma. What about this one? Delta. No. Why not? Why delta is wrong? ये बीटा का ही नेक्स्ट है ना? सो ये कुछ भी नहीं होगा ना, बट This is also gamma. Like इसका नेक्स्ट वाला बट इधर या इधर. लॉन्गेस्ट That was चेन alpha. देखेंगे तो अब See, बीटा का नेक्स्ट इज गामा. तो बीटा का नेक्स्ट इज दिस वन एंड बीटा का नेक्स्ट इज दिस वन आल्सो, है ना? इज इट ओके? सर समझा नहीं गामा क्यों? फिर से मैं बता रहा हूँ. चलो ये हटा दो, ये हटा दो. अल्फा समझा ना? अल्फा का नेक्स्ट बीटा. इज दैट क्लियर? बीटा का नेक्स्ट गामा. अब बीटा का नेक्स्ट ये भी है एंड बीटा का नेक्स्ट ये भी तो है. राइट गया तो सर वहां तो भी अगर नेक्स्ट. हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो दोनों पे वो कंप्लीट रहेगा बेसिकली, उससे अगर फर्क नहीं नीचे पड़ रहा. उससे फर्क नहीं पड़ रहा. वी आर जस्ट गिविंग इट द रिलेटिव पोजिशनिंग. डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अदर कार्बन एटम्स. तो दिस कार्बन एटम और दिस कार्बन एटम आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड, है ना? दिस कार्बन की जो लास्ट में लिखा है दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट है. तो नेक्स्ट वाले को अल्फा बोला, उसके नेक्स्ट को बीटा बोला, उसके नेक्स्ट को गामा बोला. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, व्हाट विल यू से? ये भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही तो है. तो दैट इज आल्सो गामा कार्बन, है ना? इज इट ओके? Sir, just a question. Yeah. So how did you determine that CH double bond CH is a functional group? No, right now it is alkene, है ना? बाद में हम लोग बात करेंगे कि if I am having open chain or some closed chain also, we can have some functional group. We'll see the list of functional group, है ना? Right now it doesn't have any functional group. Then we are saying कि we'll be giving the position of the carbon with respect to this alkene or double bond. Okay. We can Okay, have sir. another example in which some functional group can be there. Like I can give you an example: CH3, C, CH2, CH3, CH3, then CH, ऐसा ले लो, and then we'll be saying COOH. Now this time we have got a functional group. This is the functional group जिसके relative position की बात करेंगे. Then this carbon will become alpha. What about this carbon? ये वाला That's carbon. This is So beta. What about this carbon? gamma, Gamma. What about this one? gamma, Again gamma. है ना? Beta का next is gamma. What about this one? gamma, Gamma. What about this one? delta. Now this is delta. Understood now? So it was, this relative positioning was with respect to a functional group. सर इथाइल क्या होता है फिर? Ethyl is like CH2 CH3. ये अगर मैंने इसको नहीं as a नहीं सर, वो substituent- पता है फंक्शनल ग्रुप होता है कि कुछ और होता नहीं, ethyl is a substituent बोलते हैं उसको. है? हाँ Okay? सर. ये सब पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर में जाएंगे तो वो सब पढ़ेंगे. तो this was with respect to a functional group and इस केस में this was with respect to double bond. So how did you choose the alpha carbon in the second one? This is the functional group I told you. COOH is carboxylic acid. That is the functional group. Okay. Now we are starting from here. So the next carbon to the functional group is alpha carbon. Okay. Okay, sir. So we'll say that this is alpha carbon with respect to COOH group, which is carboxylic acid group. है ना? So whenever they see what we are saying, it is relative position. So we need to decide relative to what, है ना? So this time in first case we are saying that it is relative to the double bond. In second case we can say it is relative to the functional group which is COOH group. है? Is it okay? These things we are going to utilize later. Like मान लो कीटोन है. कीटोन क्या होता है? I'll tell you. Like if I am having CH3, CH double bond, CH, CH2 or CH and CO, या यहीं पे रख देता हूँ. If I give you
Okay. Now we are saying this is ketone group बोलते हैं इसको. Now what we are saying कि with respect to this one, देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी we can talk about that, but right now we are saying with respect to ketone ना, it is alpha, it is beta, so we say that there is alpha beta saturation. So this kind of compound will be called alpha beta unsaturated ketone. इसको बोलेंगे. What does it mean? It means जो ketonic group है ना, उसके relative में अल्फा बीटा के बीच में there is some unsaturation. Is it okay? सर ये नहीं समझा. फिर से बता रहा हूं मैं. We are calling this ketone group. ठीक है? ये सब नाम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, पूरी लिस्ट देखेंगे. तो right now I'm just telling you कि अल्फा बीटा कैसे डिफाइन करते हैं. तो if I am calling this one as the functional group, okay? Is that okay? Yes sir. Now with respect to it, this is alpha, this is also alpha, this is beta है ना. नेक्स्ट वाला अल्फा, उसका नेक्स्ट वाला बीटा, उसका नेक्स्ट वाला गामा. इज इट ओके? Yes sir. नाउ देखो लैंग्वेज कैसे यूज होंगे. वी आर जस्ट लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो लाइक इफ दे आर राइटिंग देयर इज सम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, व्हाट डज इट मीन? कीटोन का मतलब है देयर विल बी C double bond O and both the side will be some carbon atom, and then it is saying कि it is having alpha beta unsaturation. तो what does it mean? अल्फा का मतलब ये हो गया एंड बीटा का मतलब उसका नेक्स्ट कार्बन हो गया. तो उसके बीच में अनसैचुरेशन का मतलब देयर मस्ट बी सम डबल बॉन्ड है ना, और मल्टीपल बॉन्ड. इज इट ओके? Yes sir. तो these are the languages you will be getting in the questions. जब वो unknown compounds की बात करेंगे ना, this kind of language will be used. So what I was trying to teach you ना, that if I'm talking about relative positioning, if they are using alpha, beta, gamma, ये सब use कर रहे हैं ना, तो it will always be relative to something. So like if there is no functional group, we have started talking about with respect to double bond. If it is having a functional group, तो functional group के relative में alpha, beta, gamma बता सकते हैं ना. Is it okay? तो अभी फंक्शनल ग्रुप का तो नहीं, बट आई टेल यू, आई गिव यू सम क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू अल्कीन वाला ही. आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, बट अगेन आई एम टेलिंग यू इफ यू डोंट गेट एनीथिंग जस्ट आस्क इट. इट विल बी हैविंग सम एक्सप्लेनेशन. हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलूंगा कि बाद में फिर वापस से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, इफ यू डोंट गेट एनीथिंग जस्ट आस्क द क्वेश्चन. डोंट हेजिटेट इन आस्किंग एनी क्वेश्चन. लाइक इफ आई आस्क यू फाइंड आउट द सर नंबर फिर ऑफ. कीटोन को ज्यादा डोमिनेंस मिलता है क्या? हाँ, कभी भी आगे जाकर हम लोग ये पढ़ेंगे. फंक्शनल ग्रुप विल हैव मोर डोमिनेंस देन द मल्टीपल बॉन्ड एंड दैट विल बी हैविंग मोर डोमिनेंस ओवर सब्स्टिट्यूएंट. ये आगे पढ़ेंगे हम लोग. ओके. तो नोमेनक्लेचर में वी आर गोइंग टू फॉलो दिस रूल. Fg इज फंक्शनल ग्रुप. इसको अभी के लिए होल्ड करो, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे. दिस मींस मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट. तो जो एक पेरेंट चेन मेन चेन चूज करेंगे, जो बची हुई चीजें उनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट. ठीक. तो उसमें जाएंगे हम लोग जब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करेंगे. तो राइट नाउ आई एम गिविंग यू जस्ट क्वेश्चन with respect to this alpha beta इस तरह का. I am giving you find out the number of, right now I am telling you alpha hydrogen only, atoms in the following compounds. First one is
थोड़ा थोड़ा निकल जाता है उसको इग्नोर कर देना बिकॉज इतना बैठ के ड्राइंग करना इज वेरी डिफिकल्ट. This is with respect to double bond. तो जहां सिर्फ डबल बॉन्ड है इट इज ऑब्वियस दैट कि उसी के रिस्पेक्ट में. चलो इतना करो. नंबर के साथ बताना होगा निरंजन. हाउ डू यू नो कि हाउ डू आई नो कि तुम कौन से क्वेश्चन का आंसर. पहला वाला सर पहला. ओके. डन. ओके चलो जी फर्स्ट का. फर्स्ट का आंसर. So 8. 3. ओके लेट्स सी. दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, है ना. बट इट इज नॉट आस्किंग यू कार्बन, इट इज आस्किंग यू हाइड्रोजन. तो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. ओके सो वी हैव गॉट 3 here, we have got 3 here and we have got 2 here and that's why 8 will be the answer. Is it okay? Clear now? So It the is question. asking you alpha hydrogen atoms, not carbon. So any hydrogen bonded with alpha carbon will be called alpha hydrogen. Okay. So just a question. Yeah. So over here, so the alpha carbon won't be the carbons that are double bonded, right? No, no, no. They will- Alpha is the Alpha next so- carbon to the double. Oh, acha. Okay. Okay, sir. Yes. So we have got 8 here. Now what about second one? 2. Okay, let's see. 2. We have got only this one as alpha, है ना? And it is having 2, so that's why only 2 will be the answer. Okay, third one. 7. Third one. Okay, this is alpha, and this is alpha, है ना? So we have got 3 here, 2 here, and 1 here, and that's why 6 on. Next one. This is alpha, this is alpha, 10. this is alpha, this is alpha. इधर तो 3 3, इधर 2 2, है ना? And that's why we'll be getting 10. This we are going to use in something called hyperconjugation. We are going to use this concept. Fifth one. This is alpha, this is alpha. There are only 4. 4. Okay, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे. Okay, यहाँ पे. This is alpha, this is 6. alpha, this is alpha, this is alpha. So we have got 3 here, but there are no hydrogen on this or this, है ना? So यहाँ 0 and 0. That's why we'll say alpha carbon is there, but alpha hydrogen is not there on the left side, and that's why only 6 will be the answer. Is it okay? Next one, seventh ka. 9. 9. Okay, let's see. We have got this one alpha, this one alpha, this one नहीं सर alpha, गलती से 9. and this one alpha. So यहाँ पे 3 3 2 and 1. Okay. So we have got 3 3 6 2 8 plus 1 9, है ना? We'll be getting 9. Is it okay? Any doubt up to this point? Any doubt? चलो now थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ nomenclature का. So if I'm having a general compound, general organic compound, it is having a basic structure. Okay, I'll just change the tab so that you get the idea. We are entering into nomenclature wala part. So what kind of structure you will be getting for the nomenclature of the compound?
it is having this kind of thing. Like if you see this one now. So if you see this one, so we have got word root plus primary suffix. This is the main part. So if I'm talking about alkane, alkene, alkyne, इतने से ही काम हो जाता है most of the case में. कुछ जगहों पर फिर आगे और पीछे भी बढ़ेंगे. So this word root plus primary suffix forms the base name of the compound. Like when I say word root, what does it mean? It indicates the word root. This indicates the number of carbon atoms. Number of carbon atoms in the something called parent chain or main chain. We'll learn that how to identify that parent chain or main chain. That's one part. What about this primary suffix? Primary suffix indicates saturation or unsaturation present in the main chain or parent chain. When I say primary suffix, so this will indicate, this indicates presence of saturation, that means there is no double bond or multiple bond in general, or unsaturation in the parent chain or main chain. चलो इतने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. So like when I say word root, what does it mean? I told you कि it is going to indicate the number of carbon atom in something called parent chain. एक लिस्ट में दे रहा हूँ, but again 10 तक भी ध्यान में है तो काम हो जाता है अपना. But there is a whole list about word root. So like if the parent chain or main chain is having one carbon, word root will have the word meth. If it is having two तो eth, 3 है तो prop, 4 है तो but, 5 है तो pent, then hex, then hept, and then oct, non, dec, undec, dodec. इतना भी ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है. बाकी इसके अलावा भी 13 है तो क्या, 20 है तो क्या, 30 है तो क्या, 40 है तो क्या, and then 31, 40, 50, 60, 70 सबका नंबर दे दिया है. But these are not going to be used. हेक्टेन एक ध्यान में रख लेना 100 के लिए. बाकी if you cover the 12 तक ना, तो normally when they give you the question, तो they don't give you the parent chain with more than 12 carbon normally. ठीक है, एकदम extraordinary क्वेश्चन बनाना होगा तो ही they'll be changing it, but otherwise they don't give you more than 12 carbon in the parent chain. ठीक है, that's one part. तो practically if you just know यहाँ तक ना तो काम हो जाएगा. Practically I am telling you, बाकी तो theoretically कुछ भी दे सकते. So this is one part. So this is going to prepare the main base name of the compound along with the primary suffix. When I say primary suffix, what does it mean? Primary suffix का मतलब है you can have only all the single bonds or you can have multiple bonds also. So you need to take care of that. So when I say primary suffix, what does it mean? It means if I don't have any multiple bond, I'll write ane. जैसे I'll give you an example. एक एक करके सारा एग्जांपल देख लेते हैं. So like if I am having this one, बताओ जरा word root क्या रहेगा? How many carbon we have got? But 4 है ना. 4 के लिए we use but as the base name है ना, as the word root. So we have used but. Is there any double bond here? Yes. No. Then I'll write इसके आगे ane. So this has become butane. Is it okay? But if I'm having a double bond, and double bond can be present here, and I can have another compound where double bond is here. Now, if I have to name these things, so if I have got double bond and there is just one double bond, then we'll be writing ene. Okay, like if I write it this one, इसका नाम रखना होगा तो word root. How many carbon atoms we have got in this compound? This one 4. 4 है again. So we'll write but. And then उसके बाद because it has got one double bond, so we need to write ene.
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैन बी हैविंग, अब देखो इसका सेकंड वाले का, इसमें हाउ मेनी कार्बन एटम्स वी हैव गॉट, दिस वन 4. 4. 4 अगेन, तो ब्यूट लिखना चाहिए, and it has got a double bond, so that's why in, are they same or different? They'll be different, right? So somehow we need to take Isomer. that difference in the nomenclature also, है ना? And that's why what we do now, we give the number to the carbon atoms. We'll learn about that. So numbering will be started, which gives you the smallest value to the double bond. Like यहाँ से number start किया 1, 2, 3, 4. We will call it 1 butene, or we can write but 1 ene. इसको क्या बोलेंगे बताओ जरा, इस सेकंड वाले को 2 butene or 2 butene. butene Butene. बोलेंगे. So we'll write 2 butene, or we'll write but 2 ene. Understanding my point? इसी में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एन की जगह इन की जगह आइन आ जाएगा, दिस वाई विल बी कमिंग. ओके, सो विल सी दैट इन फ्यूचर जब हम लोग सारा नोमेनक्लेचर करेंगे. अब इसी में कभी कभी दो दो डबल बॉन्ड आ सकते हैं ना. वी कैन हैव अ कंपाउंड लाइक, इसी पे बात करते हैं, वी कैन हैव अ कंपाउंड लाइक दिस वन. अभी यहाँ तो दो डबल बॉन्ड आ गए, देन विल बी यूजिंग द टर्म कॉल्ड डाइन. तो इसको बोलेंगे ब्यूटाडाइन, एंड उसी में नंबर करेंगे तो इट विल बी 1 2 1 3 ब्यूटाडाइन. ठीक है, इफ यू गिव इट नंबर 1 2 3 4, तो 1 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है एंड देन 3 पे स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट 1 3 ब्यूटाडाइन. ओके, तो ये बाद में सीखेंगे डिटेल में, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज. इसी में अगर 3 डबल बॉन्ड आ जाते तो ट्राइन यूज करेंगे, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो डाई आइन यूज करेंगे, एंड 3 आ गया तो ट्राई आइन यूज करेंगे. एनी डाउट? सर, हाँ जी. कार्बन अपने साथ ही 4 बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता? हाँ, बना सकता है ना, क्वाटरनरी कार्बन है तो खुद के साथ 4 बना रहा है ना. नहीं सर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वैसे. फिर से बोलो. सर लाइक अभी अच्छा, ये बोलो, एल्कीन. ये ऐसा इसी हाँ के साथ ऐसे. बना दे. दिस पार्ट यू आर सेइंग यस. that you need to see with the hybridization, है ना. मान लो कार्बन का जो excited, even if you take the excited state configuration, what you are getting, this is the excited state configuration, है ना. Is it okay? यस सर. Clear ना. Now if you want to form the bond, अभी यहाँ बोलो ये 4 बॉन्ड अगर बना लेगा ना, they will be too weak, मतलब they are going to overlap and orbitals are in totally different directions, है ना. Is it okay when I say orbitals are present but they are in totally different directions, तो एक का overlap करवा कोई दूसरा इतनी दूर रहेगा कि उसका overlap ही नहीं होगा. We have the C2 molecule जिसको हम लोगों ने molecular orbital theory में देखा था ना, and it was having a double bond, that means bond order was coming to be 2, है ना. Is it okay? यस. What I told you, मान लो कार्बन ने एक साथ एक ये ओवरलैप कर लिया हेड ऑन. अभी इसके बाद लैटरल ओवरलैप करना होगा ना, तो ये मान लो ये वाला लैटरल ओवरलैप एक हो गया, देन उसके बाद एक इधर से अगर किया तो ये वाला दूसरा हो गया. अभी तीसरा वाला विल बी इन टोटली डिफरेंट डायरेक्शन, दैट कैन नॉट ओवरलैप, है ना. एंड दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग कि ये खुद के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकते. क्लियर पॉइंट. यस सर. And now second thing is, if you have to see the evidence, again I am telling you कि केमिस्ट्री में हमेशा पहले ऑब्जर्वेशन देन एक्सप्लेनेशन होता है. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल कॉल्ड C2, है ना, अगर ऐसा होगा तो C2 बनेगा ना. तो C2 मॉलिक्यूल इज एग्जिस्टिंग बट द एविडेंस सेज दैट कि इसके इमेज में डबल बॉन्ड मिलता है, बॉन्ड ऑर्डर इज कमिंग टू बी 2, है ना, एंड बोथ ऑफ देम आर कमिंग पाई के अंदर होते हैं. ये मैंने एक्सप्लेन किया था केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे ना. चलो, तो ये कहानी यस. हो गई. अब इतने की बेसिस पे ही वी कैन हैव द सेक्शन जिसमें हम लोग सिंपल अल्केन अल्कीन अल्काइन के नोमेनक्लेचर की बात कर सकते हैं. ठीक है, तो लाइक इफ आई गिव यू
जस्ट एक अच्छा टाइम हो गया क्या? ठीक है, अभी आज इतने पे छोड़ते हैं. नेक्स्ट डे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जितना पढ़ा है इतने की बेसिस पर देखेंगे कि हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बट वी नीड टू फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स दैट वी आर गोइंग टू कवर ऑन द नेक्स्ट सैटरडे अगेन. तो वहां पे हम लोग जाके पहले अल्केन, नॉर्मल ओपन चेन अल्केन, ओपन चेन अल्कीन, ओपन चेन अल्काइन, इन सब के नोमेनक्लेचर की बात कर लेंगे. देन विल बी टॉकिंग अबाउट साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, इन सब की बात करेंगे. देन विल स्टार्ट एडिंग द फंक्शनल ग्रुप आल्सो. ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. तो आई थिंक 1 से 2 लेक्चर में वी कैन, 2 लेक्चर लगेगा इफ यू गो, ठीक से अगर पढ़ा तो 2 लेक्चर लगता है. ठीक है, तो 2 लेक्चर और लेंगे नोमेनक्लेचर पे, देन विल एंटर इनटू जीओसी. ओके, चलो जी, जिनका डाउट्स है वो रुक जाओगे, बाकी सब यू कैन गो. ओके, बाय एवरीवन. बाय सर, Hi थैंक sir, यू. thank you sir.